नमस्ते, वेलकम टू द बेटर लिविंग। आज हम कर रहे हैं 15 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड योगा स्ट्रेचेस। आपकी बॉडी में स्टिफनेस हो या जनरल मॉर्निंग स्ट्रेचेस करने हो, दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड ऑल्सो do like and subscribe the channel if you like our videos. We are a new channel trying to grow. Thank you so much for your love and support. Let's start without wasting time. We will start with walking out the legs. Keep walking at your pace. Let's speed up a bit. Move back and forth until your body temperature has risen a bit. Next, we will stretch. With inhale, stretch upwards. Take it to left side. We will take it to the other side. Stretch out. With exhale, come down. Next, we will bend forward in Prasarita Paduttanasana. Bend forward. If available, catch your ankles. Hold spine straight, look down. आप जितना नीचे जा सकते हैं वहाँ पर होल्ड करेंगे. We will take 5 breaths here. With inhale, gently come up. We will hold the tabletop position. पीठ आपकी एकदम सीधी रहेगी. And breathe. आपके hamstrings में stretch आना चाहिए. With inhale, we will come up and we will take a back bend. Support your back with your hands and bend back. We will take 5 breaths. 5 सांस लेंगे हम यहाँ पर. Hold. With inhale, come up. Next, we will take triangle. For this, point out your right toe 90 degrees and left toe forward. Arms को shoulder level पे खोलेंगे. Move your body towards right and then go down. आप अगर नीचे नहीं पहुंच पा रहे हैं, then keep a block under your hand for support. दूसरा हाथ ऊपर and look up. We will take 5 breaths. Triangle pose is very beneficial for detoxifying the body, especially आपको अगर पेट में तकलीफ है, constipation, acidity रहता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है. Next we are taking परिवृत्ता त्रिकोण आसन. ऊपर वाला हाथ पैर के opposite direction में जाएगा and दूसरा हाथ ऊपर जाएगा. दृष्टि आपके ऊपर वाले हाथ के साथ. 5 सांस लेंगे हम इस पोजीशन में. Now we will move both hands to right and left of the leg. Try to bring your face close to your knee. एक deep stretch hamstring में आपको feel होगा. If the stretch is too intense, place blocks under your hand. Move as per your comfort. With inhale, come up and we will take triangle on left side. Left toe pointing at 90 degrees. Back toe pointing forward. Take your body towards left. Move down. ऊपर वाले हाथ के साथ दृष्टि आपकी ऊपर. And both shoulders should be in one line. Do not lean at one side. Keep breathing. Don't hold your breath. Breathe. Now we will take Parivritta Trikon Asan on left leg. ऊपर वाला हाथ लेफ्ट लेग के बाहर की तरफ और लेफ्ट हाथ ऊपर जाएगा. दृष्टि आपके हाथ के साथ ऊपर मूव करेगी. 5 breaths. यहाँ पे आपको अच्छा स्ट्रेच फील होगा हैमस्ट्रिंग्स में. अगर आप नहीं पहुँच पा रहे तो प्लीज़ ब्लॉक्स यूज़ करिए या कोई और ऑब्जेक्ट. Next, we are placing both hands right and left of left leg to get a stretch in the left hamstring. Feel the stretch and observe your breath. All the attention on the breath moving in and out. With inhale, come up and we will take goddess. Kali आसन लेंगे. Knees bent, elbows bent.
Smile on your face. With exhale, relax. Take 3 breaths and we will take second round. Go down and hold. Focus on your breath. With exhale, come up. आपको किसी भी आसन में अपनी ब्रेथ होल्ड नहीं करनी है. Last round of Kali Asan Goddess pose. We will go down and try to hold for 3 to 4 breaths. With inhale, we will come up. Take rest for 3 breaths. Next, we will take Malasan. नीचे बैठेंगे मलासन में. एल्बोज को नी में क्लास्प कर लीजिए और स्पाइन स्ट्रेट रखनी है. And now we will observe our breath. Take 5 breaths in Malasan. Malasan is very good not only for your reproductive organs but also for your digestion. अगर आपको acidity या constipation है तो Malasan is the one for you. Try taking a bind. नहीं होता है then also it's okay. शोल्डर को नी के नीचे पुश करके और दूसरा हाथ कमर के पीछे से साइड से ये ऐसा दिखना चाहिए. शोल्डर को नी में फिक्स करेंगे, हाथ पीछे घुमाएंगे, दूसरा हाथ कमर के पीछे से. दृष्टि आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ. ब्रीथ, कीप ब्रीदिंग. वी विल डू द सेम ऑन द अदर साइड, लेफ्ट साइड. दृष्टि राइट साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में. अगर आपको मलासन में बैठना चैलेंजिंग लगता है तो अपने बटक्स के नीचे एक ब्लॉक रख सकते हैं. नेक्स्ट वी विल टेक बद्ध कोण आसन. दोनों पैरों के सोल्स को मिलाएंगे, हाथ को नीचे क्लास्प करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट एंड बेंड फॉरवर्ड. बद्ध कोण आसन टाइप ए में स्पाइन स्ट्रेट रख के नीचे बेंड करते हैं और इसके बाद हम टाइप बी करेंगे जिसमें हम अपना स्पाइन राउंड करके सर को अपना सोल ऑफ द फीट पे टच करने की कोशिश करेंगे. जितना आप कंफर्टेबली बेंड कर सकते हैं उतना करिए और होल्ड करिए. द मैजिक ऑफ एनी आसन वर्क्स जब हम उसे होल्ड करते हैं. सिर्फ एक पोजीशन में जाके बाहर निकल आने से उसमें इतना इफ़ेक्ट नहीं आता. जब आप होल्ड करते हैं तब आपके ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट आना शुरू होता है उस आसन का. विद इनहेल वी विल कम अप एंड वी विल टेक टाइप बी बद्ध कोण आसन. वी विल राउंड द स्पाइन एंड गो डाउन. विद एक्सेल राउंड योर स्पाइन and try to touch your forehead on the feet. If you cannot reach, then also it is okay. Inner thighs की flexibility पे depend करता है आप कितना नीचे जा पा रहे हैं. It's completely okay. They take time to open up. Regular practice is the key. Keep breathing. Focus on your breath. With inhale, we will gently come up, straighten your legs and we will take Paschimottanasana. Toes should be pointed, legs should be together. You can choose to do it like this or if you want to intensify the stretch तो आप blocks यूज़ कर सकते हैं अपने पैरों के आगे. अगर आप अपने पैरों को नहीं रीच कर पा रहे तो आप एक स्ट्रैप या दुपट्टा लेकर होल्ड कर सकते हैं अपने पैर. We will go down and take 10 breaths here. Paschimottanasana is such a great asana to stimulate all your digestive organs, all the organs located inside your belly area. Everything gets stimulated and it also helps you with belly fat if you practice regularly. Keep breathing. Observe your breath. With inhale, we will gently come up. Next,
we will take Upavishta Kone type A. Open your legs जितना आप comfortably कर सकते हैं. Palms forward. Walk forward with your palms. जितना आप comfortably नीचे जा सकते हैं. Hold there. The objective is to bring your chest on the mat, but it is completely okay if you cannot reach down. You are still working on the targeted organs. Take 10 breaths. Stay down. Keep breathing. You should be getting a stretch in your inner thighs. With inhale, gently come up and move your arms towards your right leg. Try to catch and bend over your leg. If available, you can touch your knee with your forehead to get a better stretch. Another 5 breaths here. Observe your breath. Keep breathing. We will now move towards left leg. Gently move and lean over your left leg. आप जितना आगे जा पा रहे हैं उतना ही जाइए. You should listen to your body and do not push yourself too much. Keep breathing. Inhale, exhale. Inhale. With exhale, come up. Next, we will take Skandasana on right leg. अगर आप बिगिनर हैं तो हो सकता है आपकी हील नीचे टच ना हो, और अगर आप टच करते हो so you tend to fall backwards. That is completely alright. If you want to intensify, you can take a bind like this, जैसे हमने मालासन में लिया था, या आप जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं. That is completely okay. You are still getting the stretch. Take 5 deep breaths. Engage your mind over your breath. We will now move to the other leg. दूसरी साइड स्ट्रेच करेंगे. On the left side, breathe. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Keep breathing. Three more breaths here. With exhale, gently come out of the pose. Next, and lie down on your belly. Hands next to your chest. We will come up in Bhujangasana. With inhale, come up. आपका pelvic floor नीचे pushed होना चाहिए. Look up, दृष्टि ऊपर सीलिंग की तरफ. Take 3 breaths. With exhale, relax. We will do one more round of Bhujangasana. Relax. With inhale, come up.
if you want to intensify your stretch, bend your legs as well. जितना भी जाते हैं, it is completely all right. Look up, दृष्टि ऊपर सीलिंग की तरफ, neck भी stretched होना चाहिए. And breathe. With exhale, come down. Relax. And now come on your spine. Last for the day, we will do twisting. To get a better stretch, we are crossing the legs before moving. Legs आपके right में और दृष्टि left को जाएगी. We will change the cross and then change side. Legs to one side and drishti to the other. You will get a stretch in your spine, in the side body. Keep crossing the legs and keep changing. Do as many as you are comfortable with. You can also hold in this position for 10 breaths. One more to the left and relax. Take rest in Shavasana. Observe your breath for 3 to 4 minutes. So thankful you practiced with me today. Thank you so much. Have a nice